Yes, ma'am. Your next topic is FM transmitter. In previous lecture, we have discussed about AM transmitter. Any one of you can explain the description of this AM transmitter? Any one of you? How we can achieve the AM modulated wave and transmit it to the antenna? मैम हम इनपुट में ऑडियो सिग्नल लेते हैं और Audio प्री signal एम्पलीफायर से मैम ऑडियो सिग्नल माइक से जैसे then next मैम प्री एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करता है मॉड्यूलेशन के लिए yes मैसेज सिग्नल को, फिर मैसेज सिग्नल एएम मॉड्यूलेटर को इनपुट की तरह प्रोवाइड किया जाता है और आरएफ ऑसिलेटर से उसे कैरियर वेव मिलती है मैम carrier signal और वो उसको प्रोडक्ट करके आउटपुट okay और वो मैम दोनों के को प्रोडक्ट करके आउटपुट देता है और पावर एम्पलीफायर उस then at आउटपुट this point उस इनपुट सिग्नल got AM modulated wave, but we have to amplify the amplitude of the power amplifier to transmit it into the antenna. That's why we are using here power amplifier. Okay. Now next is FM transmitter. Now what is FM? yes frequency Frequency modulation modulator. अब क्या करना है? Generate the frequency modulated signal and transmit it to the antenna. How we can do it? Again, takes the audio signal that is input from the microphone and delivers FM wave to the antenna, that is your transmitting antenna, and this antenna is used as an output that is to be transmitted. So this is the block diagram of FM transmitter. Very first is audio signal, that is the output from the microphone is sent to the preamplifier. Now why we are using here preamplifier? Again, for the purpose of preamplification, to boost up the level of the modulating signal. Modulating signal is also called your message signal. जो आपका audio signal है उसके amplification करनी है, उसके boost up करना level, increase the level of the signal. That's why we are using here preamplifier. Clear है? yes ma'am Okay. After this pre-amplified signal then pass through a high pass filter. HPF is high pass filter. You can draw this diagram on your notebook also. अब high pass filter क्या करेगा? That act as a pre-emphasis network. I am writing here pre-emphasis. Pre-emphasis means to filter out the noise. अगर कोई नेटवर्क में जब उस सिग्नल में नॉइस आ रही है, हाई पास फिल्टर क्या करेगा? टू फिल्टर आउट द नॉइस एंड इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइस रेशियो. S/N रेशियो, दैट इज सिग्नल टू नॉइस रेशियो. जितनी ज्यादा आपकी नॉइस फिल्टर आउट होगी उतने ज्यादा सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा होगी. Noise come, signal to noise ratio is high. That is the purpose of high pass filter. That's a pre-emphasis, act as a pre-emphasis network to filter out the noise. Second is second input from the RF oscillator that generates the, yes, what is the purpose of RF oscillator here? ma'am to provide the carrier signal, Provides a carrier signal that generates a high frequency carrier signal. That is the second input that is given to the FM modulator, and first one is from this. Then अब FM modulator क्या करेगा? That generates the frequency modulated wave. At this point you will get FM modulated wave. After this, frequency multiplier is here. That is several stages of frequency multiplier are used to increase the operating frequency. अब हम FM की बात करें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर यहाँ पे यूज किया है कि
जो आप ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे उसे इंक्रीज करना, तो सेवरल स्टेजेस होंगे। सपोज आई एम सेइंग कि 1 से लेके अप टू सो ऑन n तक है, तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाना है। सो द इसके बाद भी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई यूज करके भी द पावर ऑफ द सिग्नल इज नॉट सो हाई टू ट्रांसमिट, that's why we require power amplifier here, that is RF power amplifier, radio frequency power amplifier, to increase the level of the power of the modulated signal, कि जो modulated signal है उसके level को increase करना। And this FM modulated wave is finally pass to the antenna that it is to be transmitted। यहाँ से आपने आउटपुट को ट्रांसमिट करना, that is your FM transmitter। Now any question in this? Yes, मैम S divided by N, हाँ जी। मैम S divided by N, S divided by N is your signal to noise ratio, S is signal to noise ratio। And what is the purpose of high pass filter? That is pre-emphasis network to filter out the noise from the signal। अब noise को filter out करेंगे, that means जो आपका signal है उसकी जो sensitivity है वो increase हो जाएगी। Sensitivity in the case of that means filter out the noise means noise is less and signal की जो है वो ज्यादा है, that means S is more, that's why signal to noise ratio is more in this case। clear है? yes ma'am, What is the purpose of high pass filter? To filter out the noise, to remove the noise from the signal and increase the signal to noise ratio। In next lecture, in next topic, we will discuss signal to noise ratio for AM, for double sideband suppressed carrier, and many more। If any doubt is there in FM transmitter, then you can ask me। Yes, friends. no doubt ma'am. Okay. Now, our next topic is noise। Yes, any one of you? मैम अनवांटेड हाँ जी। सिग्नल जो होते हैं मैम, अनडिजायर्ड सिग्नल जो होते हैं प्रेजेंट किसी मैसेज सिग्नल में, नॉइस कब आती है सिग्नल पे? मैम नॉइज, Suppose I am saying about communication system, when will noise occur? हम जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो मैम नॉइस आ जाती है। Okay, during the transmission of the signal? नहीं मैम, रिसीविंग के टाइम पे भी Yes. मैम आती है। In any communication system, during the transmission of the system or while receiving the signal, some unwanted signal gets entered। कोई unwanted signal introduce हो गया communication system में। अब उस सिस्टम में जो अनवांटेड सिग्नल जनरेट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके कारण क्या हुआ? दैट विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। यस, yes ma'am, आर यू गेटिंग? सच टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज नॉइस। नाउ यू कैन सी हियर, in this example, that is a noise signal। Suppose we have a sinusoidal wave like this, that is your input, that is to be transmitted from the transmitting antenna and received through a receiving antenna। but जो मैंने सिग्नल सेंड किया वो रिसीव नहीं हो रहा, ट्रांसमिटिंग के टाइम पे उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ गई, that is called as noise। is that clear? yes ma'am, Okay,
So this is your noise signal, that is an unwanted signal which interface with the original message signal. जो हमने original message signal किया था उसके साथ interface कर दिया, जिसने parameters को corrupt कर दिया. But at what type of parameters? Like amplitude, frequency. Now you can see here amplitude भी vary कर रहा है, frequency भी change होगी. So that corrupts the parameters of the signal, and this alternation in the communication process leads to the message getting altered. जो मेरा message था वो change हो गया. Suppose I want to transmit LKCE, और जो हमने LKC में बोल रही हूँ कोई स्पीच सिग्नल है, कोई ऑडियो सिग्नल है, उसे हम वेवफॉर्म के थ्रू सेंड कर रहे हैं, बट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी एरर आ गया, LCK करके रिसीव हो रहा है. दैट मीन्स जो आपका मैसेज है वो अल्टरनेशन होगी उसमें. Is that clear? So this is an example of noise signal. After this, noise क्या है? Noise एक signal ही है, but having no pattern. उसकी कोई particular shape नहीं है, which can't be easily predicted. We have already discussed about deterministic and random signal. So इसकी ना कोई constant frequency है, ना कोई constant amplitude है. You can see amplitude भी vary कर रहा है, frequency also vary. So it's a quite random and unpredictable that can't be easily find out. जिसे हम easily predict नहीं कर सकते. So it's a random or unpredictable signal. Done? Yes. Yes. Okay. With the help of some measures, we can reduce it, but we can't eliminate it thoroughly. आप इससे पूरा eliminate नहीं कर सकते noise को, हम reduce कर सकते हैं noise के level को. So common examples क्या है? Radio receivers में कोई sound produce होना, that is the example of noise. Buzz sound, जो आपकी buzzer है उसमें कोई sound आ रही है, television conversation में flickers आना television receivers में, that types or examples of noise. Now there are two types of noise. One is internal, second one is external. अब internal noise क्या होगी, external noise क्या होगी? Yes, any one of you. You can give me an example. आप इसे observe करो, कोई भी real life example दे दो, कुछ भी. Any one of you. So these classifications of noise are depending upon the type of the source. कि आपका source कैसा है, whether it's internal or external. Yes. मैम इंटरनल नॉइस सिस्टम में जो कंपोनेंट लगे हैं की वजह से जो नॉइस क्रिएट होती है उसमें जैसे उनकी फंक्शनिंग की वजह से. ओके. और एक्सटर्नल? मैम एक्सटर्नल सिस्टम से एक्सेप्ट जो भी. हाँ जी. मैम जिसमें इन सिस्टम की वजह से कोई नॉइस ना हो, बाहर से कोई नॉइस आ रही हो. सोर्सेस से हो रही है. सपोज हमारे ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हम कोई कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, मैंने सिर्फ दो बनाया. द वन इज योर ट्रांसमीटर and second one is your receiver. How we can transmit the data or receive the data through this communication system with the help of communication medium, or we can say channel, just like a wire. Is that clear? Yes ma'am. How we can say external noise occur in this communication system, like atmospheric noise, industrial noise होगी, आपकी solar noise होगी. These are the noises that is occurred from the external sources. Clear है? Yes ma'am. आप बोलते हो कोई obstacle आ गई, आप satellite communication में हम transmit कर रहे हो, कोई भी obstacle आ गई जहाँ हम wires के connectivity करते करते hills आ गए, that type of is called as external noise. Internal noise means कि आपके सिस्टम में ही इंटरनली जो फंक्शन कंपोनेंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गई, दैट टाइप ऑफ नॉइस इज कॉल्ड एज इंटरनल. लाइक शॉर्ट नॉइस आ गई, शॉर्ट हो गया सर्किट. इलेक्ट्रिकल नॉइस जिससे बोलते हैं. ड्यूरिंग ट्रांजिशन टाइम नॉइस भी आ सकती है. रेजिस्टेंस इफेक्ट हो गया.
मिक्सर जनरेटेड नॉइस होगी कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो मिक्स हो गए जनरेशंस, दैट टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज इंटरनल नॉइस. एनी क्वेश्चन? नो मैम. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ नॉइस. अब इफेक्ट्स क्या है नॉइस के? यस, नॉइस इज एन इनकन्वीनियंट फीचर जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रहा है, which affects the performance of the system. First one is noise limits the operating range of the system. How? First one is noise indirectly places a limit on the weakest signal that can be amplified by an amplifier. तो क्या करेगा? Yes. Any one of you? First point is noise limits the operating range of the system. मैम जो सिग्नल के वेरिएबल है उनको चेंज कर देगा. Okay, उनको क्या करेगा? मैम डिग्रेड कर देगा. इसमें क्या होगा? सिस्टम ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ इट्स सर्किट्स. तो जो आपके कंपोनेंट्स हैं उन पे नॉइस क्या है? जब नॉइस आ गई वो सिग्नल क्या हो जाएगा? आपका वीक हो जाएगा. ऑल्सो नॉइस लिमिट्स द स्मॉलेस्ट सिग्नल दैट इज अ रिसीवर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग. जो सिग्नल हमने रिसीव करना है उसमें भी नॉइस ऐड होगी. Then next is noise affect the sensitivity of receiver. उसकी सेंसिटिविटी, रिसीवर की सेंसिटिविटी को अफेक्ट करेगी नॉइस को. श्योर है कि आपकी जो आउटपुट आ रही है वो डिग्रेड होके आएगी, उसमें नॉइस ऐड हो. क्लियर है? What do you mean by sensitivity? You can note down the definition of the sensitivity. Sensitivity is the minimum amount of input signal. Yes, I am audible. यस मैम. Sensitivity is the minimum amount of input signal necessary to obtain the specified quality output. Means minimum amount of input that is required to obtain the desired quality output. जो हमने desired quality output obtain करनी है. I'm again repeating, it's a minimum amount of input signal necessary to obtain the specified quality output. अब noise affect the sensitivity of a receiver system, that means which eventually degrades the output. उसके कारण आपकी आउटपुट भी डिग्रेड होगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. That means noise is more, so signal to noise ratio is less. Done? यस मैम. Now after this, next is signal to noise ratio calculations. Now we have to discuss about signal to noise ratio. First, signal to noise ratio क्या है? Signal to noise ratio means S by N. That means it is the ratio of the signal power to noise power. जितनी ज्यादा आपकी नॉइस होगी उतनी सिग्नल टू नॉइस रेशियो लेस होगी, और जितनी सिग्नल पावर ज्यादा होगी उतनी सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर? सिग्नल टू नॉइस रेशियो. यस मैम. Okay. See the formulas. First definition, it is the signal power to noise power. Higher the value of the signal to noise ratio, greater will be the quality of the received output. That means जो आप आउटपुट रिसीवर पे रिसीव कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो आपका जो आउटपुट है वो डिग्रेड नहीं हुई, सेंसिटिविटी अच्छी है उसको. Please note down the formulas. First, input signal to noise ratio क्या है? इनपुट के लिए
इनपुट जब हम देते हैं सिस्टम को, दैट इज इनपुट फ्रॉम द मैसेज सिग्नल और वी कैन से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो? दैट इज एवरेज पावर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज योर ओरिजिनल सिग्नल और वी कैन से मैसेज सिग्नल, एंड दिस वन इज एवरेज पावर ऑफ नॉइज एंड इनपुट, कि आपका नॉइज की एवरेज पावर कितनी है इनपुट पे. बट अबाउट द आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो, अब आउटपुट क्या होगी, जो हम आउटपुट पे सिग्नल रिसीव कर रहे हैं और उसमें आउटपुट कितनी है. सो एवरेज पावर ऑफ डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल बाय एवरेज पावर ऑफ नॉइज एट आउटपुट. एंड थर्ड वन इज चैनल सिग्नल टू नॉइज रेशियो, average power of modulated signal by average power of noise in message bandwidth. चैनल में जब हम मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर की तरफ से ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू अ चैनल और यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो चैनल इसकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी होगी. दिस वन. प्लीज नोट डाउन ऑल दीज फॉर्मूलाज ऑन योर नोटबुक एंड प्लीज रिवर्ट वंस डन. Yes, students, done. Yes, ma'am. Okay. Any doubt? No, ma'am. After signal to noise ratio, we have to calculate another parameter that is called figure of merit. A figure of merit क्या है? That is the ratio of output signal to noise ratio to input signal to noise ratio. It's represented by F. So ratio of output signal to noise ratio and input noise to ratio is called as figure of merit, SNRO by SNRI. And what about the figure of merit of a receiver? That is signal to noise ratio of output by signal to noise ratio of channel. और figure of merit क्या करती है? It summarize the performance of a device. आपके system की performance कैसी है? It depends on figure of merit. Please note down formulas. Yes. In this, मैंने यहाँ पे लिखा signal to noise ratio of channel. That means figure of merit for a receiver. Channel as an input. That's why. Done. Yes, ma'am. And the rest all friends, any doubt? No, ma'am. Have you noted all the formulas? Yes, ma'am. Yes. The next is signal. First one is signal to noise ratio calculation in AM system. We have already studied about AM, that is amplitude modulation. अब उसमें signal to noise ratio calculation करनी है. Draw this diagram on your notebook. What is S of T? That is amplitude modulated wave. अब इनपुट पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के साथ एक नॉइज सिग्नल ऐड हो रहा है, देन इट गिव्स टू द बैंड पास फिल्टर टू जस्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड बैंड at this, that is V of T, and after this demodulator is used to extract the original signal back. Is that clear? What is the description of this? Yes, ma'am. Okay, please note down this diagram on your notebook. I am writing here the standard equation of AM, that is S of T is equal to. Yes, any one of you can tell me क्या होती है standard equation of AM? पिछला पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि नहीं? Yes. Any one of you?
हाँ जी, I'm audible, students? यस मैम। हाँ जी, पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि नहीं? मैम अभी देखा नहीं पिछले। अभी देखा ही नहीं। ओके, आपका ट्यूटोरियल कब होता है एनालॉग का? चेक द मैम टाइम टेबल एसी का। एंड हाँ जी, यस, किया चेक। आज ही है आई थिंक ना, इट्स ट्यूटोरियल। यस मैम। तो नेक्स्ट थर्सडे ऑनवर्ड्स आप लोग अपनी विश का एक टॉपिक डिसाइड कर लो। फ्रॉम वेरी फर्स्ट जो पीपीटी मैंने दी है ना आपको पार्ट 1, उसमें से एएम टॉपिक लेना है, तो एएम के कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसकी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? यस, यस मैम। तो पिछला भी आपका रिवाइज होता रहेगा, आगे वाला भी। फर्स्ट यूनिट आपके खत्म होने को आ गई है, पढ़ा कितना है ये आपको भी पता है। तो हम ट्यूटोरियल में पिछला रिवाइज करेंगे, जो लेट स्टूडेंट का वो भी कवर हो जाएगा साथ में। क्लियर है गुरसिमर एंड हरप्रीत? यस मैम। तो आप इनसे पीपीटी ले लेना फर्स्ट की, जो भी टॉपिक होएगा वो अपनी विश का मुझे एक दिन पहले बता देना कि हमने कल ये डिस्कस करना है। तो थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे ऑनवर्ड्स हम वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। This is a standard equation of AM wave. M of t is your message signal. AC cos 2 pi FCT is your carrier signal. What about KA? That is called amplitude sensitivity. और हम यहाँ पे M भी लिख सकते हैं. That is called, और mu, that is called modulation index. Do you remember this? जिन्होंने लेक्चर लगाया? Yes. यस मैम। Okay, please note down this standard equation of AM wave, that is amplitude modulated wave. Done. Now, very first is in this standard equation of AM wave, that is amplitude modulated wave. Multiply AC and cos 2 pi FCT, you will get two terms. One is AC cos 2 pi FCT. Second is AC KA M of t cos 2 pi FCT. After this, we have to calculate the average power. Why? Because we have to find out signal to noise ratio. For that purpose, we require average power of AM wave, and second is average power of noise. Clear है? यस मैम। अब एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में एम्पलीट्यूड इज AC एंड इन सेकेंड एम्पलीट्यूड इज AC KA M of t. एंड आपको पता ही है कोसाइन सिग्नल कैसे निकालते हैं हम, BM/√2 करके होती है और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज एवरेज पावर। अब यहाँ पे VM, दैट इज मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज की जगह पे AC है, ये बन जाएगा। इसकी जगह पे ये एम्पलीट्यूड है, ये बन जाएगा। आर यू गेटिंग हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज पावर? यस मैम। निकालो यहाँ से, solve it, you will get this, that is average power of AM wave, PA. Do it fast. Yes, done. Yes, friends. Okay, please respond once done.
मैम हाँ जी, m square t को p कैसे लिखा है? that is p, वो भी मैं बताती हूँ, आप m square t लिख लो चाहे। क्लियर है? Yes मैम, हो गया इतना? yes मैम, Okay. ये इतना आ गया, that is PA average power. You can also write here m square t. I'm writing here that is AC square 1 plus KA square m square t, that is your message signal, by 2. Okay. Now second is average power of noise in the message bandwidth, that is PNC, channel noise in channel, that is W, and not what is W, that is message bandwidth, and not as your noise output signal. Please note down. Done. अब यहाँ पे मैम n नॉट क्या? and not as your noise output. m square t को क्या लिखा है? p. Yes. यहाँ पे m square t को p लिखा है. Yes मैम, What is this? That is the power of the message signal. और अगर हम पावर निकालें मैसेज सिग्नल की, we all know message signal is am cos 2 pi fmt. Yes. yes मैम, You know what is m of t? That is am cos 2 pi fmt. I'm writing here first. Yes. Am is your amplitude, cos 2 pi fm t. अगर मुझे पावर निकालनी है तो एम्पलीट्यूड am है, that is what is the average power of this message signal? am square by 2. क्लियर है क्यों p लिखा है यहाँ पे? That is the power of the message signal. Done. yes मैम, Okay. Now we have calculated the average power of AM wave and average power of noise in the message bandwidth. That is PNC is equal to W and not. Now you have to use these two relations to find out the signal to noise ratio of channel in AM. Divide both, you will get your answer. Check it and verify. Yes, done, students. Yes, Sharon. मैम इसमें p को बाहर कॉमन निकाला है? नहीं, it's multiply. Okay. yes मैम, Done now. yes Have मैम, to achieve this. Okay. This is signal to noise ratio calculation in AM wave. Any question up to this point? Yes, friends. no मैम, Rest all. No, ma'am. Okay. Thank you.